मैंने टेस्ट दिया, किसी टेस्ट में मेरे बहुत कम मार्क्स आ गए। अब डिमोरलाइज नहीं होना कि इसमें मेरे कम आ गए, क्योंकि मेरे जो गेट में मार्क्स थे वो मेरे किसी टेस्ट में उतने मार्क्स आए भी नहीं थे, किसी भी टेस्ट में नहीं आए थे उतने मार्क्स। आपको हर टेस्ट से सीखना है। आपने वो टेस्ट दिया, उससे आपको देखना है कि मेरे ये चीज़ें गलत थी, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू रिवाइज दोस थिंग्स। Myself Rishabh Pandey, and I graduated from Kamla Nehru Institute of Technology, Sultanpur. It is a state government engineering college and affiliated under the UP Uttar Pradesh Technical University. I actually cleared the GATE 2017 and I got the 97 rank. And my stream for the GATE was computer science. My first interview was with TCS itself, so I got selected in TCS. After that, whichever company used to come, that company used to actually not that much good. So वो इतनी अच्छी कंपनीज नहीं थी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब सीधे गेट के लिए जाऊंगा, बिकॉज उन कंपनीज के जो पैकेज थे वो मोर और लेस सिमिलर ही थे टीसीएस। मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको अगर कंपनी में जॉब चाहिए, चाहे उसमें चाहिए, गेट में क्लियर करना है, तो आपको अपने सारे जो कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब पे ग्रेस्प होनी ही चाहिए। ये तो चाहिए, क्योंकि इवन इफ द कंपनी इज ऑफ कोर, इफ इट इज ऑफ द कोडिंग इटसेल्फ, बट इट विल श्योरली आस्क द नॉन कोडिंग क्वेश्चंस आल्सो। सो ये वो पूछेगी। तो अगर आप प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो तो गेट में आपको उतना एक्सेल करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि उतना वो है, क्योंकि इफ यू आर गुड इनफ टू क्लियर द गेट देन यू कैन लैंड इनटू द एनी गुड जॉब। जो सिलेबस है बेसिकली उसको अगर मैं ब्रॉड वे में डिवाइड करूँ, ब्रॉड वे में कंप्यूटर साइंस का, तो बेसिकली वो 3 पार्ट का होता है। एक पार्ट होता है पूरा मेरा प्रोग्रामिंग, एक पार्ट होता है मेरा नेटवर्क्स, एक पार्ट होता है मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और एक पार्ट होता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इफ 100 मार्क्स का पेपर होता है तो अप्रॉक्स 60 मार्क्स, यू कैन से 60 मार्क्स मीन्स 60% बिलोंग्स टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो प्रोग्रामिंग पार्ट क्या इंक्लूड करता है? डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सी लैंग्वेज, ये तीनों चीज इंक्लूड करता है, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। these things include 60% of the 100 question, 100 मार्क्स। 15 मार्क्स का मेरा एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है, 75 ये हो गया। रिमेनिंग 25 या फिर वो जो 60 है वो 55 या 50 तक भी जा सकता है। रिमेनिंग 25 वाला वो 25 to 30 और 35 वो बिलोंग करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट इज वेरी टफ सब्जेक्ट, and I think that is the toughest subject of the GATE and of the computer science. Whatever question comes from that, it is very less probability that someone will be able to do it correctly. So the strategy should be like this, that we should leave the CA question, computer architecture question, in the first instance. We should first cover all the programming questions, because those are not very difficult average, and that will be scoring questions, because that are covering approx 60% of your paper. So कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन को भी उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब करना चाहिए पर उसे कवर करके जाना चाहिए, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इसके क्वेश्चन ये होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, जो मतलब हो ही जाएंगे, वो फिक्स पैटर्न है, वो इसी से आएंगे। आप प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा रखा है तो वो उससे हो जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क के क्वेश्चन फिक्स है, वो हो जाएंगे, तो वो आपके जो 15 to 20 मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। पर जो अप्रॉक्स 5 या 7 मार्क्स का जो सीए आता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसको हम लीव असाइड करके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन दी एंड कूल मूड से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर स्पॉइल कर देगा। और अगर हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है तो हम अच्छी रैंक लाने की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क पढ़ रखा है तो हम 100 आ जाएंगे। सीए की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सीए के बिना भी, मैंने सीए का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था अपने पेपर में, मेरी 97 रैंक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग यानी कि डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स, इनको जरूर स्ट्रॉन्ग करें।
क्योंकि ये आपकी रैंक को अच्छी करेगा, और जो अंडर 100 ले आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी। दी फॉर्म्स ऑफ PSUs वर एक्चुअली दे पब्लिश द फॉर्म इटसेल्फ इन दी October or November month, and it was the starting month of my preparation. So I couldn't concentrate on more PSU forms. So I filled only 3 forms: Power Grid and ONGC and BBNL. My main concentration was for MTechs only. But after I got ranked, then but I filled all the IITs form, all the IITs except new IITs, all the IITs form, and only these 3 PSUs form. But after I got the rank, I got the call from IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Madras, ISC Bangalore, and IIT Bombay. And I went to IIT Bombay for MTechs. There I got the call from Power Grid, because I gave the interview for Power Grid and I didn't get selected at ONGC. I got selected in BBNL, but BBNL is not a class A PSU, that is not a schedule A PSU. I think it is schedule B PSU. And Power Grid is schedule A PSU. I got the interview call. I got the call from Power Grid, but that in that mail it was written that I got selected in POSOCO. POSOCO used to be a subsidiary of Power Grid that got separated in 2017. So I thought that let give it a try, because GATE scorecard will be valid for 3 years. So if I will not be able to manage myself in the PSU, then I will go for the MTech next year. But the thing is, in POSCO I got the coding job itself, and from 3 years I am doing the coding, and I did lot of coding. I actually created 3 to 4 applications that are running. So that's fine. So I decided to stay here. BARC interview was so much surprising that what the scenario was there, that कि उन्होंने मुझसे क्या हुआ कि इंटरव्यू के बाहर ही मुझे बोला कि आप यहाँ पे अपने इस पेपर पे 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिए, जो 5 सब्जेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने वो नाम लिख दिए 5 सब्जेक्ट्स के, सी, डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उन्होंने क्या किया, मुझे बुलाया जब मेरा टर्न आया था, तो दे विल what I saw their brilliance, that they already told me to go to the board, take the chalk, go to the board. Then जैसे मैं बोर्ड पे गया, उन्होंने कहा कि let's start with operating system. So what is operating system? They started asking basic questions. They went into deep. They went so much deep that until you can't answer the question. So but I didn't get selected in BARC, but that interview was very much, I think it went for 45 to 50 minutes, because they will take your interview till that point of time until you say, sir, I don't know much, so can you please leave me. So that was the thing. If you are under 100, then most of the artists will call you directly. But if you are after 150 rank, then you need to give the interview, and that interview will be more or less like the BARC itself, because they don't want to humiliate you. They want to see how deep your knowledge is, because everybody will stop at one point. Whatever question they will ask you, they will keep on asking you questions after questions, but they want to know you how deep you can go. Everybody, even IIT, ISC is the best, I think, in the interview itself. You go there, you will come to know that how much knowledge I have in ISC itself. So in every interview, whether IIT or any BARC, ISC, the pattern is same. They will keep on asking questions. You will feel like humiliated, but they will not humiliate you. They will keep on asking questions until you say that, sorry sir, I don't know this. So they come to know that, yeah, this guy knows till this point of time. So yes, we can take him and he will contribute something to us. So this is the thing with the IITs and IIT, ISC and other big prestigious institutions. And as far as the PSU is concerned, PSU interview was actually, in my first round was GD. So GD was like that. They gave topic just 5 minutes before the GD, और कहा कि आप बोलो तुरंत 5 मिनट में. So the group discussion was mix of Hindi and English. If you want to speak in Hindi, you can speak in Hindi. If you want to speak in English, you can go for English itself. After the GD,
they will call you one by one for the interview. In interview, there will be a panel. In panel, one will be from HR, one will be from technical, one will be from the electrical, because it is electrical company, electrical PSU, not the computer science. One will be from the finance. So there will be 4 to 5 guys. So everybody asks the question from their own department. Like HR asked question from my asked question, why you didn't took the TCS, why you are coming here, your father is doing government job, then you why you are not going for the IS PCS, why you are going for the PSU. These kind of questions HR asked, means some state based question, some situation based question. And there were some general questions like, I actually belong to Allahabad. So they asked what is the new Yojana Modi government is going to bring for the Ganga reservation, and like this, what are the famous fruits in the Allahabad, what are the famous places to visit in Allahabad. So the place where you live, where you belong, you need to have a good knowledge of that place also, because they will definitely ask you from that. So HR questions and your location based questions. Then after that, the department, their IT department head, the IT department guy who will be in the panel, he will ask from some IT questions. So actually he asked all the questions from networking background itself, because I think they were asking for some, they were actually hiring the position which used to be work on the network field. So they asked all the network questions to me, and I was good in network, so I think I replied all the questions. I gave all the answers except 1 or 2 questions. PSU has the salary structure like private, but the comfortability like government. You can say that. Because salary structure will be like private itself. Your increment will be like government itself, but your perks will be more here. So जैसे कि we used to get the newspaper allowance, washing allowance, and clothes के लिए अलग मिलते हैं हमें. So we used to get the lot of perks. I think these kind of perks are not there in the government, core government job. The best thing which I came to know here is that the medical facility. मेडिकल फैसिलिटी क्या है कि आप या आपके डिपेंडेंट फादर पेरेंट्स जो भी हो, आपका कितना भी खर्च हुआ हो मेडिकल में, द कैप डजंट मैटर, यू विल गेट रिम्बर्स्ड एवरीथिंग. 2 महीने बचे हैं. अभी लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसी ने छोड़ रखा है, तो इफ ही इज थिंकिंग कि मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लूँ, तो ये टाइम नहीं है. अभी क्या टाइम है, यू नीड टू गिव मोर एंड मोर टेस्ट, you need to do more and more revision, and you need to solve more and more previous year questions, because only 3 things will decide your success: more revision, more test, and more grasp on the previous year questions. Because previous year questions are like a bible for this gate, because every previous year question will give you some concept. That concept you will not able to get from the books itself or from the test. So previous year question, आपको सबसे पहले you have to finish previous year question not only once. I think आप जितनी बार मतलब 2-3 times जितनी बार आप उसको solve कर सकते हो करो. Then revision is second thing, कि ज़्यादा रिवाइज करना है. मैंने टेस्ट दिया, किसी टेस्ट में मेरे बहुत कम मार्क्स आ गए, अब डिमोरलाइज नहीं होना कि इसमें मेरे कम आ गए, क्योंकि मेरे जो गेट में मार्क्स थे वो मेरे किसी टेस्ट में उतने मार्क्स आए भी नहीं थे, किसी भी टेस्ट में नहीं आए थे उतने मार्क्स. आपको हर टेस्ट से सीखना है. आपने टेस्ट दिया, उससे आपको देखना है कि मेरे ये चीज़ें गलत थी, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू रिवाइज दोस थिंग्स.